Welcome everyone to this really important session. The session is really important because it is an issue that is still not resolved. The accused are still out in the open, and the stakeholders range from the police force to politicians to government officials to media houses, journalists, activists, and it's a messy issue, if I may say so. Let's jump right in. Ayush, I'd like to start the session with you. You went on behalf of newslaundry on the 25th itself to the site of the carnage. So what was your experience like? You're a young reporter. Both of you are young reporters. What was your experience like going there, experiencing the sites over there? What was it like? It was terrifying, actually. And even though I went on 25th, it was still the third day of the violence. It had started on 23rd. And on 24th, also, we were looking at the news and thinking, the clashes have been happening since the CA protests began, but they were between protesters and police. I didn't at least personally realize that this time that the clashes were happening, it was full-blown communal. And so I went on the third day, which was, I think, towards the later phase, but it was also the worst day of the violence. And I reached the Jafrabad metro station around 3 at that afternoon, and that was the site of one of the two major protests happening there. मैं जब गया था दंगा तो खत्म हो चुका था, लेकिन जिस दिन हम पहुंचे, मैं और आयुष भी दोनों साथी थे, तो जो पहला मतलब हम दोनों घूम रहे थे और मुस्तफाबाद के विधायक से मिल रहे थे देखने के लिए, तो जो पहले दिन मैंने जो वहां देखा कि एक फैमिली के दो भाइयों की जुड़वा भाइयों की बॉडी आई है, तो वहां से मेरा शुरू हुआ कि मैंने दंगे को समझना शुरू किया। आप बताओ बसंत, जब आप गए थे तो आपका वहां पे पुलिस प्रेजेंस के साथ कैसा इंटरेक्शन था, लॉ एनफोर्समेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन था जब आप रिपोर्टिंग करने गए? राइट्स तो 26 तक हुआ, लेकिन आप देखिए कि जैसे आयुष ने भी बातचीत में बताया कि छुटमुट तो पहले भी हो रहा था। मुझे और आयुष, हमें याद है कि हम लोग जब ये जामा मस्जिद पे चंद्रशेखर बैठे हुए तो उस दिन भी बहुत बड़ा विवाद हुआ था और हम लोग रात 11 बजे तक रिपोर्ट कर रहे थे। जामिया में हम देख ही रहे थे, शाहीन बाग के आसपास देख ही रहे थे। 21 दिसंबर को, अगर मुझे ठीक से याद है डेट, तो वहीं उसी इलाके में जहां बाद में चल के राइट्स हुआ, उसी इलाके में काफी देर तक पुलिस दरअसल पहले पुलिस और सीए प्रोटेस्टर के बीच चीजें चल रही थी, लेकिन जब ये राइट्स हुआ तब पुलिस पीछे हो गई और जो सीए समर्थक थे वो आगे आ गए। तो हम लोग उस पुलिस के व्यवहार को तो पहले ही से देख रहे थे, पुलिस किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन जब मैं दिल्ली आया और मैं ग्राउंड पे उतरा राइट्स कवर करने के लिए, तब फोर्स आ चुके थे, अर्धसैनिक बल के जवान वहां मौजूद थे और माहौल शांत हो चुका था। लेकिन तब लोगों की बॉडियां मिलने शुरू हो गई थी नाले में और अलग अलग जगहों पे। लोग अपने जो गायब हो चुके थे, कुछ लोग गायब हो चुके थे, मिल नहीं रहे थे, वो तलाश रहे थे, कुछ लोगों की लाशें मिल रही थी। In one of the reports, there's this interesting thing that I read when you went to Shakti Vihar, and over there you said that violence had not broken out, and the elders in that area were the ones who kept the peace and influenced the youth to not be violent, Hindu and Muslim youth. I think that's very interesting. How can you tell us a little bit about that? It's almost a pattern with communal violence in India that, it's always led by young people. One of the journalists, when we were reporting, told me this, that it's not really Delhi. It's a UP in a way. It's an extension of UP into the capital. Because a lot of people from Western Uttar Pradesh, Aligarh, Rohilkhand and Saharanpur, they've settled there since 3-4 years in the 80s. And so the Hindus and Muslims of that area have always been living cheek and jowl. So that interaction, some sort of an ethic builds up, I think, over the years. And elders in Shakti Vihar realized that, but it was still, I also wrote that it was, there was a calm, but it was a deceptive calm, because even though people trust each other to a degree, it's also keeps on eroding hour by hour in those situations. And when we in Basant went there, the police had started its crackdown in the entire area, and the men they were being picked up by the hour, they were being thrown into jails, and you could tell that people were fearful. So it was peace in the sense that there was no violence, but it was not peace in that there was no
intensity of emotions among those people who that no one could sleep at night. Everyone was guarding their streets, or they were trying to find out what happened to people who live far away from them, their relatives. I think ये जो violence हुआ है, ये सबसे ज़्यादा social media में इसका involvement था. मतलब WhatsApp forward, doctored videos, अलग अलग तरीके की misinformation तो जारी थी. तो आपके challenges क्या थे एक रिपोर्टर होके, मतलब इस तरीके से रिपोर्ट करना जहाँ पे सभी झूठ बोल रहे हैं, और मतलब पुलिस से लेके सबकी स्टोरी अलग अलग थी, और प्रूफ जो भी था उसको तो मतलब डिनाई करके. तो आपका अनुभव कैसा था, क्या चैलेंजेस फेस किए? देखिए, इस पूरे राइट्स में सोशल मीडिया की भूमिका तो काफी रही है. हमारी एक रिपोर्ट भी है कट्टर हिंदू एकता ग्रुप को लेकर, जो शायद हम एनएल सेना की पहली रिपोर्ट थी जो हम लोगों ने किया था. किस तरीके से ग्रुप के जरिए उसमें सूचनाएं, और आप पढ़ेंगे उसमें, उस चैट को पढ़ेंगे तो उसमें कितनी सारी गलत सूचनाएं दी जा रही है, कितना मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, और वो सब उस वक्त हो रहा है जब राइट्स शुरू हो गया था. Yeah, I think the biggest challenge we face, of course there is misinformation on WhatsApp, but what really has started to happen in few years, so is constant muddled up information coming to us from journalists themselves. So when we went on the ground and we finally realized that a lot of what was being told to us, that what happened to Ankit Sharma, what happened in that theater of violence was just not true. ये जो आपने पूरी रिपोर्टिंग की, और मुझे दोनों से पूछना है, इसमें कुछ आपको, जो आपने जैसे फैमिली से बात की, अक्यूज से बात की, या विक्टिम से बात की, जिससे भी बात की, कोई ऐसा एक कॉमन थ्रेड आपको नजर में आया? कुछ कॉमन चीजें, एक ऐसी चीज जो हर फैमिली के दिमाग में थी, या इस टाइप से? फैमिली के दिमाग में ये है कि जो कॉमन है, जो जितने हमने रिपोर्ट की है, उसमें 2-3 चीजें कॉमन रही. एक तो कोर्ट ने भी ये कमेंट किया है, हमने अपनी स्टोरी में कोर्ट के कमेंट से पहले ही लिखा था कि कोई भी कम्युनल राइट्स होता है तो उसमें एक दूसरे को लोग मारते हैं, खुद को ही नहीं मारते. मतलब ऐसा कहा जाए कि हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहा है, या हिंदू दलित, या जो भी राइट्स हो रहे हैं, तो उसमें मैं जिसके खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं अपने ही लोगों को क्यों मारूंगा. लेकिन इसमें कई केसेस हमने देखा. अभी हाल ही में हमने एक रिपोर्ट किया था साजिद का. आप देखिए, हाल में अभी 10 दिन पहले हमारी रिपोर्ट आई थी. साजिद को गोली लगती है और उसमें गिरफ्तार 6 मुस्लिम होते हैं. इससे पहले हमने मारूफ अली की स्टोरी की थी, शाहिद आलम की स्टोरी की थी. और सबसे हैरान करने वाला पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये लगा हमें, मतलब मैं मजाक में कहता हूँ, कई बार हम आयुष बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस को एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है, जो कहानी तो थोड़ा ऐसा लिख दे कि बीच में फंसे नहीं. तो ये है. I think a lot of families did tell us that people who this is more of not a this is not something that is factual, it's just like emotional nugget, that a lot of people said that those who attacked them, or those who were out to kill them, were people whom they had known for the longest time. मुफ्त खोरो, मुफ्त में इतना ही मिलेगा. To watch the full unedited interview, you have to subscribe to News Laundry and pay to keep news free. Because when the public pays, the public is served. We depend on you and not on advertisers. So go to www.newslaundry.com/subscription and subscribe and get all our unedited interviews, our special video shows, comics, and everything that's behind the paywall. Remember, to subscribe to News Laundry, you pay just about 10 rupees a day. That's less than, well, no, a cigarette. And smoking is injurious to health. So subscribe and watch the full interview. Was there any adverse effect on you guys and your mental health while covering this report? आप इस thought process को किस नजर से देखते हैं? What were the challenges you faced when you were making the report, especially on the documentary? Why religion comes always in the path of these kind of fires? Sometimes people say that we're a great civilization and we've been around for 5,000, 6,000 years, but the flip side of that is that there's 6,000 years of heavy history that affects our present. Technically, none of them are eyewitnesses because they can't identify a person. But when I asked them, then how do you say that this man, was the one who's involved and carry out that arson and murder, whatever? And they said कि that's because he's a bad character. अभी तक ये किसी को भी नहीं पता चल पाया है कि दंगा शुरू कहाँ से और कैसे हुआ.
अभी तक हम सब बस अनुमान लगा पाते हैं कि ये ऐसे हुआ, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ, क्या कोई पॉलिटिकल साफ इन्वॉल्व, हम दूर से देख रहे हैं ना, कहने के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन हमारे किसी के पास एविडेंस नहीं है। The social stereotype just does not impermeate your society, it impermeates your institutions, your police, your jurisprudence, your courts. I mean, courts are comparatively better, but still, there are things I cannot say, but I've seen it. Why is it that people are going towards the same people who are failing over and over again? बट कि नहीं, हमें इनसे ही उम्मीद है। समझने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद किसी दिन समझ में आ जाए कि लोग के मन में ये क्या है। हो सकता है कि जब आदमी ज्यादा आस्थावान हो जाता है तो तर्क को किनारे रख देता है। Thank you both Ayush and Basant sir. It was a very interesting report and very fabulous work you guys have done.